In last lecture, we talked about basic introduction to image processing. We are still continuing with it to do some more introduction. Now we will be talking about image processing. In last lecture, most of our discussion was about basics of imaging. Okay, but now let's talk about image processing. Okay, so what is basically image processing? Once you acquire an image, there might be different type of issues in the image. Okay? पॉसिबल है कि उसमें नॉइज हो, पॉसिबल है कि उसमें कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन हो, राइट? पॉसिबल है कि उसकी क्वालिटी जो है वो सही नहीं होती, पॉसिबल है कि बाज़ औक़ात आपको इमेज के अंदर बहुत से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आ जाती हैं एंड यू माइट बी इंटरेस्टेड ओनली इन सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, right? There is possibility that you might be transforming an image to another form, or you might be comparing one image with another image. Okay. So, in simple words or in mathematical language, when you define image processing, it means you have to apply a function, a certain type of function on the image to change its characteristic. एज आई सेड, या तो उसको आप क्लियर करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो करेक्टरिस्टिक है उसमें चेंज आ जाएगा, उसके वैल्यूज में क्या होगा, चेंज होगा. इस केस में जो इनपुट होता है, इन सेंस जो फंक्शन हम ले रहे हैं, उस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इमेजेस एंड द रेंज विल आल्सो बी इमेजेस. या हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि जो लो लेवल वो था प्रोसेसिंग की और हाई लेवल प्रोसेसिंग में फिर वो उसमें फिर आपको कंक्लूजन करने होते हैं, आपको डिसीजन लेने होते हैं, राइट? बल्कि लो लेवल उसमें क्या होता है, हम सिंपल इमेज ही हमारे पास आउटपुट में आ जाता है. तो इनपुट भी इमेज होगा, आउटपुट भी इमेज होगा, बीच में क्या हो जाती है, प्रोसेसिंग होती है उसकी. ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, इमेज जो है वो एक्वायर होगा इधर से, राइट? इमेज आ जाता है एंड दैट्स बेसिकली व्हाट, दैट्स द रॉ, यू कैन कॉल इट रॉ डाटा, राइट? अ रॉ इमेज. और फिर इसको यहाँ पे हम सेंड करते हैं. यू सी दैट हाउ डू वी सेंड इट टू द सिस्टम, टू द प्रोसेसर? Yeah, it is converting basically the image into numbers. Okay, they might be binary numbers, they might be base 8 numbers, base 10 numbers वगैरह वगैरह. और फिर ये प्रोसेसर जो है इसको प्रोसेस करेगा और and then it will be giving you a clean or clear image. Okay, it might be clearing something, it might be giving you something important. Obviously ये सारे जो tools हम mainly हम इसको discuss करते जाएंगे. Okay, नहीं, यहाँ से जो मशीन है ये सेंसर, यस थैंक यू, ये इसको कन्वर्ट करता है, ये इसको प्रोसेस करता है. इससे कैमरा होता है ना, कैमरा पिक्चर्स लेता है और फिर इसको हम, या नहीं, वो पिक्चर्स के बैकग्राउंड में जो मेमोरी स्टोर होती है वो नंबर्स के फॉर्म में होती है, या मैट्रिक्स की फॉर्म. लेकिन वो कंप्यूटर कैसे इसको रीड करता है, ये तो उसका आउटपुट होता है, जो आपको नजर आ रहा होता है वो आउटपुट होता है, लेकिन कंप्यूटर तो 0-1 पे काम कर रहा होता है. वो वाले हम बात कर रहे हैं जो उसको स्टोर करते हैं वहां पे. ओके, सो this includes, so what? This is in image processing. Obviously, we do image display. How to display it? That can be done. You know that we have done that in last lecture to display the images by using that command I'm show or images. See, we use these two commands for displaying images. We can do some editing as well. ठीक है, उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप उसमें कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आप उसको एनहांस कर सकते हैं, राइट? उसकी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं. We can detect feature as well. हमने कल की लेक्चर में बात की थी कि sometimes we are interested in feature extraction, feature detection. आप features को detect करते हैं फिर आगे उनको यूज करते हैं. And we talked about image compression as well. बाद इमेज को हम कंप्रेस करते हैं, एक जो हम वो लिखते हैं ना साथ में एक्सटेंशन जो होती है .jpg, .jpg, ये वही उनके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट्स में वो उनके साइज को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जो मेमोरी साइज होता है, क्वालिटी को इफेक्ट किए बगैर. इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं, इमेज कंप्रेशन हम इसको कहते हैं. ओके, वी हैड
discuss some applications, but you can have still many applications of MS processing. We can use that in biology, mainly when you study biology में जो cells होते हैं, सेल बायोलॉजी को अगर आप देखना चाहते हैं, एक सेल को आप फॉलो करना चाहते हैं, वो कैसे मूव कर रहा है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसकी कैसे पार्टीशन हो रही है, अगर आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, उसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, तो फॉर दैट पर्पस व्हाट डू वी डू, वी यूज इमेज प्रोसेसिंग. ओके, या ऑब्वियसली आप इफेक्टेड सेल्स हैं उनको भी अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो भी यू कैन यूज इमेज प्रोसेसिंग फॉर इट. यू कैन यूज इन एस्ट्रोनॉमी एज वेल. ओके, इमेजेस आते हैं, उसके बाद फिर प्रोसेस करते हैं आप उसको. ओके, बिकॉज क्लियर इमेज तो ऑब्वियसली नहीं होगी, देयर इज ऑलवेज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज जो इन्वायरमेंट है उसमें डिफरेंट टाइप के रेस मौजूद होते हैं और ऑब्वियसली वो जो इमेजेस होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं. ठीक है, you can use that in medicine, obviously, for detection of tumor, or sometimes we are interested to find abnormal region in the brain or any part of the body. इसमें usually हम use करते हैं to detect the region जो कि इसमें gray matter होता है, may have black matter and we have white matter. ये ब्रेन में ये टर्म्स यूज होते हैं. तो अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं कि इस बंदे के वाइट मैटर कितना है ब्रेन में, ब्लैक मैटर कितना है, इसका ग्रे मैटर कितना है, तो वो भी कर सकते हैं. या जिस तरह हम यूजुअली करते हैं ट्यूमर डिटेक्शन के लिए, आप इसमें ट्यूमर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड ऑब्वियसली कैन यूज दैट फॉर सिक्योरिटी एज वेल, जस्ट टू डिटेक्ट एंड रिकॉग्नाइज थंब इंप्रेशंस. ओके, इसको आप फिंगरप्रिंट्स के लिए यूज कर सकते हैं. राइट, सिक्योरिटी में ऑब्वियसली आप इसको सीसीटीवी कैमरास भी यूज कर सकते हैं. आप किसी कार को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी सस्पिशियस पर्सन को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको फॉलो करना चाह रहे हैं, तो वी यूज दैट this process, image processing. We do have satellite imagery as well. Satellite images लेगा वहाँ से, जिसमें obviously noise होता है, कभी बीच में clouds आएंगे, तो clouds obviously वो तो image फिर भी वो कर लेता है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ region effect होता है. या as I said, उसमें different type के rays available होते हैं nature में, environment में, तो वो भी उसकी imaging को effect करते हैं. और ये आपके personal photos, आपके नहीं है, मतलब जो आप वो करना चाहते हैं. ऐसा ना हो कि आप कह दें कि ये ओके जी. सो नाउ what are the basically steps we do in it? The first step is removing noise from the image. Right. Now, what is basically noise? In a while, I'm basically explaining that mathematically. Okay. We are basically introducing a model for it as well. So you see, noise basically means if there is something unwanted, there's always some addition in the pixel values. Okay, some extra unwanted region उसमें आ जाता है. एक होता है noise in image, एक होता है noise in signal. ठीक है ना, तो signal भी noise हो सकता है, जो कि हम usually voice recognition में या जो phone आता है उसमें भी कभी कभी disturbance आती है, तो वही noise होती है. ठीक है, अच्छा, इसमें आप खुद से noise add भी कर सकते हैं किसी भी image में, और फिर इसके बाद obviously by using some models or some techniques to remove that noise. तो नॉइजी इमेज होता है. एक नॉइज होता है जो कि एक मैट्रिक्स ही होता है वो, लेकिन एक एक्स्ट्रा रैंडम मैट्रिक्स होता है जो आप उस इमेज के साथ ऐड कर देते हैं. ब्लर इज समथिंग डिफरेंट, वो आ रहा है इसमें. नॉइज देखिए, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो आप टीवी में बाज़ औक़ात देख रहे होते हैं और पिक्चर क्लियर नहीं होती है, जो डॉट्स आ रहे होते हैं, उसको नॉइज कहते हैं. ठीक है ना, मोस्टली ये मेडिकल इमेजेस में अकर करता है. अल्ट्रासाउंड में काफ़ी ज़्यादा होता है ये, जो उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है. अब यहाँ पर आप किसी भी चीज़ की दूर से तस्वीर ले रहे होते हैं ना, तो भी वो नॉइज ही आता है उसमें, उसमें नॉइज होता है. ठीक है, यू कैन एड नॉइज एज वेल, जिसमें हम ऑब्वियसली यूज़ करते हैं कमांड आई एम नॉइज. नहीं, तो ये प्रोसेसिंग से ही ख़त्म करते हैं ना. मशीन में तो इशू आता है, वो तो रेज वो करेगा. अब जिस तरह से साउंड अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो बेसिकली साउंड वेव्स पे काम कर रहा होता है. अब आप यहाँ पे बॉडी पे कर रहा है,
तो उससे जो साउंड वेव्स जाएंगे वो बीच में बहुत सी चीज़ें और भी होंगी, तो वो साउंड वेव्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब वो साउंड वेव्स को डिस्टर्ब करेंगे तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी समथिंग रॉन्ग, देयर विल बी सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोड्यूस होंगे, और वो फिर ऑब्वियसली इमेज को वो करेंगे। तो वो तो लाजिम बात है, वो तो उसको तो आप रिमूव नहीं कर सकते ना। साउंड वेव्स अब मैं बात कर रहा हूँ बीच में सपोज कर, तो यहाँ पे तो इतना खास होकर स्ट्रॉन्ग मीडियम नहीं है, तो आपको आवाज़ शायद सही आ रही है, लेकिन बीच में अगर कोई यहाँ पे और भी बोल रहे हैं तो शायद आपको मेरी आवाज़ सही नहीं पहुँच रही, बिकॉज साउंड वेव्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि इधर से बीच में स्किन भी आता है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, और जब वो वहाँ तक पहुँचता है तो बीच में वो कई जगहों पे इफेक्ट होता है। अगर मैं अब ऐसे बात कर रहा हूँ तो आपको शायद क्लियरली आवाज़ आ रही है, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ तो आवाज़ पे इफेक्ट पड़ जाता है ना। रीज़न ये है कि मतलब यहाँ से फिर वो उसके जो वेव्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहा है, इस वजह से इसमें नॉइज़ आता है। ठीक है, इसको जो मैटलैब में कमांड है वो हम सिंपल यूज़ करते हैं, आई एम नॉइज़ का कमांड यूज़ करते हैं विद डिफरेंट वेरिएंस एंड डिफरेंट मीन, उसमें हम ऐड कर सकते हैं नॉइज़ को। ओके, इफ़ यू वांट टू डू दैट, लेट सपोज हम वही इमेज ले लेते हैं जो हमने क्या था, वो टिफ था, पीएनजी था। Okay, so use the image. If you display this image with color map gray, there will be some noise in it as well. I don't know if there is some noise or not. And it's color map. Use this gray. Come on. It's taking a bit while now. So you see that that's a clean image. Now, if you want to add some noise in it, so you may call that W, and we use this command M noise. U with some mean, let's give them mean 0 and standard deviation maybe 0.1. Okay, and then I want to display the same image. What is it? What was this? The image kya tha? Yeah, it was in unit 8, so you have to convert that into double. You have to convert that into, because we cannot do calculations in unit 8. That's a base 8 something. So we need to convert that into double first, then you can do that. So we may do same step, but I would write here double and then u, right? ये बात आप नोट कर लें कि अगर हम एक इमेज के साथ एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहे हैं, you can multiply that, you can find its gradient, you can integrate that image, you can find some of the intensities in an image, लेकिन उसका पहले डबल होना ज़रूरी है। या इस तरह से डिफरेंट नंबर रिप्रेजेंटेशंस हैं ना, बेस 2 का, बेस 3 का, बेस 4 का, बेस 5 के होते हैं, बेस 10 के होते हैं, इस तरह बेस 8 के होते हैं। तो ये डबल का मतलब भी बेस 2 का आप कन्वर्ट कर दो इसको, ठीक है, तो फिर वो आप कंप्यूटेशन कर सकते हो। अभी इसमें आपको इशू नहीं देगा, अभी भी दे रहा है। क्या किया मैंने? सेम टाइम मस्ट बी करेक्टेड स्ट्रिंग। चलो मैं इस तरह कर देता हूँ पहले, डब्ल्यू इज इक्वल टू डबल एंड देन यू, ठीक है, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू आई must be W. इसको यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में लेके जाना है। Let's say Gaussian noise, असल मैं इसको इतना यूज़ नहीं करता, हम सिंपल उसमें एक रैंडम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो उससे उसमें नॉइज़ आ जाता है। In this way, see, if I take W is equal to, and then we have W plus
0 point something, maybe 0.1 or 0.1 times that matrix. So original matrix है which was size of the फिर से हम इसमें ऐड कर सकते हैं नाइस को. It's another way because we are just adding a random number with some multiple, and you may increase this by taking multiple other than 0.1. 2 मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई करें. अब अगर हम इसको डिस्प्ले करेंगे, so image sc and then w. अब इसमें इतना नॉइस अभी नहीं आया, so let's increase that quantity to something maybe 100 or something, and then we display this image. You see, so you can use that I'm nice command as well. You can check simply. You write help and then space and then I'm nice. It gives you all the information about command I'm nice. Okay, so you can do that in this way as well. Okay, so you see that we can simply remove the noise, and you should keep this in mind कि मैंने इसमें noise कैसे add कर दिया. जो given image था उस image के साथ मैंने कुछ add कर दिया. ठीक है, तो वो एडिशन आपको बाद में फिर रिफ्लेक्ट होगी जब हम इसको मॉडल करेंगे कि एक नाइजी इमेज बेसिकली it is composed of two things. One is the clean image and plus some random matrix or something like that. Okay, yeah, we can basically adjust the contrast as well. That's image contrast, जो कि obviously हम करते हैं, उसमें लो कंट्रास्ट होता है एंड ओरिजिनल कंट्रास्ट होता है, और फिर उसके कंट्रास्ट को आप बढ़ाते हैं, मतलब इंटेंसिटी लेवल्स को आप बढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंगली. Okay, तो उसकी कंट्रास्ट जो है वो बढ़ जाती है. वी कैन डू दैट इन इमेज प्रोसेसिंग एज वेल. Okay, you can detect the ages as well because it plays important role in robotic study. रोबोट्स जो होते हैं मोस्टली एजेस पे काम करते हैं, या अगर आप कहीं से भी फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फीचर्स आर बेसिकली सेपरेटेड थ्रू एजेस. और एजेस बेसिकली हम कैसे फाइंड करते हैं, ये डिसकंटिन्यूटीज होते हैं मैट्रिक्स के अंदर. दे आर डिसकंटिन्यूटीज. ओके, जहाँ पे ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट उसका अनडिफाइंड होता है. होमोजीनियस रीजन में इमेजेस के लिए ग्रेडियंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. ठीक है ना, तो यू सी दैट यहाँ पर वो जहाँ पे एजेस हैं वहाँ पे ग्रेडियंट जो होगा वो इन्फिनिटी होता है, मतलब उसमें जंप आता है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इन्फिनिटी होता है. तो जहाँ पे ग्रेडियंट इन्फिनिटी होगा, जहाँ पे भी एज आएगा वहाँ पे ऑब्वियसली जैसे डिस्कंटिन्यूटी है वहाँ पे. तो डिस्कंटिन्यूटी केस में क्या होता है, यू नो दैट a point at which function is discontinuous cannot be differentiable. अगर डिफरेंशिएबल है तो हो सकता है कि वो कंटिन्यूस हो, बल्कि हो सकता है होता है कंटिन्यूस, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूस है तो वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता. तो हम वही बात कर रहे हैं कि इस ग्रेडियंट को हम यूज़ करेंगे लेटर ऑन, आप देखेंगे फिर, जिसमें हम एजेस को फाइंड करेंगे. इफ यू टेक सिंपली जो इमेज आएगा, वी कैन डू दैट, लेकिन अब ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे साथ. एनीवे, थोड़ी देर बाद मैं करता हूँ. ओके, समटाइम्स वी डिटेक्ट रीजन, उसमें एजेस को हमने डिटेक्ट किया था, एंड नाउ वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट रीजन्स. जैसे कि ब्रेन के अंदर आपके ट्यूमर को डिटेक्ट करना है, या जैसे मैंने कहा कि हम अगर ब्रेन के अंदर डिफरेंट मैटर्स जो हैं, वाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, व्हाटएवर, अगर उनको आप क्लासिफाई करना चाहते हैं, उनको आप सेपरेट करना चाहते हैं, तो उस केस में बिकॉज ग्रे मैटर है या वाइट मैटर है, वो क्या होता है, वो एक रीजन ही होता है, दैट्स फॉर्मिंग अ रीजन. ओके, तो उस रीजन को हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, तो हमें डिवाइड करना होता है. दैट इज नोन एज इमेज सेगमेंटेशन. यू सी दैट इन दिस केस हम इस पार्ट को अलग कर रहे हैं, यू सी दिस पार्ट,
और इसको अलग कर रहे हैं और इसको अलग कर रहे हैं. There might be abnormality in the image or in the body, in the brain, or they might be simple या तो कोई bone होगा, ठीक है ना, या उसमें जैसे मैंने कहा ग्रे मैटर है, वाइट मैटर है, कभी कभी कुछ और फ्लूइड आ जाता है ब्रेन के अंदर, तो उसको अगर आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, फिर उसको आप स्टडी करते हैं कि ये आगे स्प्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसके आप बार बार ये एनालिसिस करते हैं और वहाँ से आपके पास ये चीज़ें आती हैं. या यू कैन कंप्रेस द इमेजेस एज वेल. ओके, compression से क्या होता है, as I said earlier, you see the original image that has a size of 2.1 MB, when you compress that up to 15%, okay, the size becomes 308 KB. We have reduced basically the size in not in that sense कि उसमें number of pixels और number of उसकी बात नहीं होती, जो memory वो occupy करेगा, ठीक है ना. तो इसमें बाज़ images ऐसे होते हैं जो कि एक फॉर्मेट में उसकी साइज़ ज़्यादा होती है, दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो वही इमेज होगी, लेकिन उसकी साइज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो ये इमेज कंप्रेशन है जिसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं. कंप्रेशन से कम होती है वो अलग चीज़. डिफरेंट जो स्टाइल्स होते हैं ना, जेपीजी, पीएनजी, टीआईएफ, .rtf भी है शायद इसमें, .bmp है. नेक्स्ट टाइम फिर आप मुझसे पूछना देते हैं, बिकॉज ये कंप्यूटर साइंस वाले होता है, नॉट मैथमेटिक्स जॉब. तो जस्ट गिविंग देम एक्सटेंशन. इस तरह से फाइल आपके पास होता है ना, एक वर्ड फाइल है तो वो डॉक्स होता है, ठीक है ना. दूसरा जब हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं इट बिकम्स .pdf. सेम थिंग लाइक दैट. वो .m फाइल होता है, ये इस तरह से पाइथन में फिर वो .py होते हैं या .ipndp क्या वो वाला जो होता है जब नोटबुक में कर रहे होते हैं, या वो चीज़ इसमें होती है. ओके जी, नेक्स्ट वन इज इन पेंटिंग. We can do digital in painting as well. If you have some old images and they have some sketches, so you can improve that. You can remove the sketches as well. You can remove text from images as well. If there is a text written on the image, you simply scan that image and then apply some image processing tools. You can clear that image and then you can take print of that image again. Yeah? You see that there was some extra information here, or you may say that this image was basically torn and then you want to repair that back. So simply scan this image and then you clear it. ठीक है ना. किसी जगह पे किसी ने आपका तस्वीर क्या कर दिया, पार्ट दिया, आप दोबारा उसको बना दो, ऐसे मज़ा नहीं आता उस तरीके से. तो आप उसको दोबारा स्कॉच टेप से क्या करें, इसको बना लें और फिर उसको स्कैन करें, और स्कैन करने के बाद फिर उसको उसकी इनपेंटिंग करें. इनपेंटिंग में वो क्या करते हैं, बेसिकली नाइबरिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं कि भाई अगर ये पिक्सल है तो उसके साथ जो पिक्सल मिसिंग है उस पर तकरीबन सेम इंटेंसिटी होगी, ठीक है ना. तो वो उस तरीके से हम इसमें कर रहे होते हैं. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जो मीडिया के लोग होते हैं जो मूवीज़ वगैरह में होते हैं उसमें भी इनपेंटिंग की यूज़ होती है कि डिफरेंट चीज़ से आप रिमूव कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं वगैरह वगैरह. दिस इज़ नोन एज डिजिटल इनपेंटिंग. ओके, समटाइम्स अगर मेडिकली हम बात करना चाहें तो यू टेक वन इमेज ऑफ समथिंग एंड देन दूसरे साइड से आप इमेज ले रहे हैं, तो एक साइड पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, इफ़ दे आर मिसिंग, तो हम क्या करते हैं, उस दूसरे इमेज की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन भी इसमें हम डाल सकते हैं. राइट. अगर एक तरफ से वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही और आपको बेसिकली चाहिए भी वही साइड है, दूसरी साइड से इमेज लेकर वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप क्या कर दें, ट्रांसपोर्ट कर दें, वहाँ से आपने उसको लेके आना है. Okay, usually we use these branches of mathematics in image processing. We're talking about calculus, because in calculus we do what? We do optimization, we do minimization, and in image processing, specifically when we talk about variational image processing,
तो उस केस में हम डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट मॉडल, एंड दोज मॉडल्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन सम फंक्शनल्स। एक तो हमने मॉडल्स पढ़े थे ना, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। और फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन से फिर हमारे पास आउटपुट्स आते हैं, आगे भी हमें चाहिए होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। फंक्शंस विल बी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द इमेजेस, राइट। वो फंक्शंस होंगे जिसको हम फंक्शनल कहते हैं, बिकॉज इसका इनपुट क्या होता है, इमेजेस होते हैं, तो वो वेक्टर स्पेस बन जाता है। और देन मैंने बताया था आपको कि फंक्शनल क्या होते हैं, जिनका डोमेन फंक्शंस होते हैं, मतलब जिनका डोमेन वेक्टर स्पेसेस होते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ कर रहा है। देन वी बी टॉकिंग अबाउट लीनियर अलजेब्रा एज वेल, बिकॉज इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ध्यान में रख लें। वंस वी हैव फंक्शनल, तो उस फंक्शनल को फिर हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, उनकी मिनिमाइजेशन करते हैं, बिकॉज आपने ऑप्टिमल चीज़ फाइंड करनी होती है। अभी शायद आपको ये नहीं समझा मैं कैसे इशारा कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन वी डू दैट। उसमें ऑप्टिमल क्या होता है कि आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है और आपने ये इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। ये नॉइजी डाटा है, ये नॉइजी इमेज है, और आपने क्या करना है, इसे नॉइज को रिमूव करके क्लीन इमेज लेना। क्लीन इमेज आपके पास शायद ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा इमेज ढूंढते हैं जो कि इसके करीब तो हो। करीब का मतलब यह है कि उसका स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन सिर्फ ये है कि जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आ रही है, उन इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर दें, उनको हम रिमूव करते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, उनको आपने रिमूव करना है। तो व्हाट डू वी डू, जो मेरा सोल्यूशन है, जो मेरा गिवन डाटा है, आई वांट दिस इमेज टू बी वेरी क्लोज टू दिस वन, तो मैंने उन दोनों के डिफरेंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है, विथ सर्टन कंडीशन। एक तो ये है कि भाई आप इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रॉब्लम, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इनवर्स प्रॉब्लम में आपके पास सोल्यूशंस भी यूनिक नहीं होते, ये बात में हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन नहीं होगी, बिकॉज जिस तरह हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जैसे हम एंटी डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, तो एंटी डेरिवेटिव में आपके पास सोल्यूशन यूनिक नहीं होता। टू एक्स एक फंक्शन है, आप उसकी एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो उसकी कितनी एंटी डेरिवेटिव होती हैं, इनफाइनाइट होती है, बिकॉज वी आर हैविंग सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी कैन बी एनी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो मतलब उसकी सोल्यूशन यूनिक नहीं होती। फिर उसको हम स्पेसिफिक कंडीशन के साथ लेके आते हैं, फिर वो यूनिक हो जाती है। Okay, we also talk about, we may not that much talk about probability statistics, because हम बाज़ औक़ात कुछ मॉडल्स को डिज़ाइन करते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे बेस पर होता है, ठीक है। हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े कहीं पे मैं डिस्कस कर लूँ, अगर क्या कहते हैं, मौके के नज़ाकत या वक्त के नज़ाकत को देखते हुए शायद हम इस तरह से एक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ये मॉडल है, इसमें ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा है, ये डेंसिटी फंक्शन है, और यहाँ से फिर हम कैसे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ, राइट। We do talk about differential equations. If you remember, मैंने ये कहा था कि जब हम algebraic equation को minimize करते हैं, तो हमारे पास जब हम function को minimize करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो equation आता है वो algebraic होता है, right? Do you remember that? Yeah. If you simple आपके पास suppose करें function है f of x is equal to x cube minus 3x square plus 2, and you want to find its minimum value or maximum value, इसकी optimization करते हैं, तो you have to take its first variation, उसकी डेरिवेटिव लेनी है आपने। जब डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उस डेरिवेटिव को हम इक्वेट करते हैं जीरो के, that will be 3x square minus 6x is equal to 0. Now that is what? That is algebraic equation. And then we solve that algebraic equation for what? For the values of x, और वहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं उस पर। लेकिन जब हमारे पास फंक्शनल्स होते हैं और फंक्शनल्स को मिनिमाइज करते हैं, तो उस केस में जो ऑप्टिमल वैल्यूज आते हैं, दे आर यूजुअली सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। वहां पे अलजेब्राइक इक्वेशंस नहीं आते, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशंस आते हैं। इज दैट राइट? हम क्या करेंगे, जब फंक्शनल को मिनिमाइज करेंगे, ओके, उसकी मिनिमाइजेशन से जब इक्वल टू जीरो करेंगे, फर्स्ट वेरिएशन लेंगे उसकी। इस तरह हम कैलकुलस में, सिंपल कैलकुलस में बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। इस तरह हम वेरिएशनल कैलकुलस में बात कर रहे होते हैं, फर्स्ट वेरिएशन, दैट इज ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे हो सकता है हम ग्रेडियंट को यूज़ करें, हो सकता है हम डॉट एक्स डेरिवेटिव को यूज़ करें, हो सकता है हम
आयलर लेग्रांज मल्टीपल उनको यूज करते हैं. डिफरेंट टेक्निक्स हैं फॉर फाइंडिंग फर्स्ट वेरिएशन. ओके, तो उसमें डेरिवेटिव्स होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वेरिएशन होता है. इस तरीके से हम बात करते हैं. तो दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू डिफरेंशियल इक्वेशन. और फिर हमने उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है. एंड दे विल ऑब्वियसली बी हाईली नॉन लीनियर इक्वेशंस. और नॉन लीनियर इक्वेशन को फिर हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. यू कैन नॉट सॉल्व देम एग्जैक्टली. Usually, most of it. बाज़ औक़ात हो सकता है we may solve them exactly. But if you have a non-linear equation and उसकी non-linearity भी इतनी strong हो कि usually तो non-linearity सिर्फ dependent variable के product से आते हैं या उनके higher power से आते हैं. You may take u into du by dx, so it's a non-linear, right? लेकिन अगर उसकी non-linearity में derivatives involve हो फिर, right? या उसकी derivative की कोई negative powers हो, negative fractional powers हो, ठीक है ना, तो वो और भी कम्प्लेक्स हो जाते हैं. फॉर दैट पर्पज वी नीड टू यूज सम न्यूमेरिकल मेथड्स एज वेल. और वो न्यूमेरिकल मेथड यूजुअली डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं हम उसकी. और डिस्क्रिटाइजेशन के बाद यू विल बी हैविंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. यूजुअली हम लिनियराइजेशन करते हैं और फिर उस सिस्टम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. Right? We do obviously go for differential geometry and we may go for harmonic analysis as well. हमारा जो मेनली वेरिएशनल सेंस में जब बात करते हैं हम सिर्फ तकरीबन ये डिफरेंशियल इक्वेशंस तक जाते हैं और फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. राइट, कंप्यूटर वाले ये चीज़ें भी यूज़ करते हैं. दे आर गोइंग फॉर डिफरेंशियल ज्योमेट्री एज वेल टू डू. मे बी मैं कुछ ऐसे बातें करूँ जहाँ पे हम फोरियर एनालिसिस यूज़ करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ नॉइज. वी आल्सो यूज़ वेवलेट्स फॉर टू रिमूव द नॉइज फ्रॉम इमेज. मे बी थोड़ा सा मैं आपको उसका टच करूँ. लेकिन हमारा जो मेन एम होगा, जो मेन मकसद होगा, वो होगा हाउ टू यूज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस, हाउ टू यूज़ फंक्शनल टू minimize the noise or to find a clean image from given data. Okay, तो हमारा मेन मकसद ये फर्स्ट 4 पॉइंट्स है, उनको हम हमारा ज़्यादा फोकस इसी पे होगा. लेकिन हो सकता है कहीं पे आ जाए कि भाई हम कहीं पे फोरियर को भी यूज़ कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स को, टू रिमूव द नॉइज. Okay, so now how do we define that noise problem in mathematically, right? So denoising is basically the process of removing noise from the image, right? ये हमारे पास क्या है, ये इसका क्या है, इसका जिसका मॉडल है u naught, that is the observed image. This is the given information, and that observed image given information we can write that is the solution, which is basically the clean image. यहाँ पे जब भी हम solution की बात करेंगे in case of image denoising, so we would be meaning what? We would mean that we are talking about the clean image, the denoised image, the restored image. ठीक है ना? तो इसमें यूजुअली हम यू नॉट को यूज करते हैं और यू को यूज करते हैं. यू कैन यूज ईदर वे, इट डजंट इफेक्ट एनीथिंग. ठीक है ना? तो बाज़ों का जब आप अपना रिपोर्ट लिखते हैं तो आप ये मिस्टेक कर जाते हैं कि भाई एक जगह आप यू नॉट को यूज़ करते हैं क्लीन इमेज के लिए, फिर थोड़ी देर बाद आप यू को यूज़ करते हैं क्लीन इमेज के लिए. इट्स बेटर दैट यू शुड यूज वन नोटेशन थ्रू योर रिपोर्ट. इफ यू हैव यूज्ड यू नॉट एज अ given image, noisy image, you would use that throughout your report. Okay, and if you have used U as a clean image or as a solution image, you should use U as that image throughout the report. ऐसा नहीं करना कि आपने एक जगह पे एक यूज किया फिर अगली जगह पे दूसरा यूज किया. Okay, so you see that U naught x जो है that is equal to Ux, that's a clean image, plus Nx. Okay, Nx, that is the noise, that's the extra information, that's the unwanted information which are present in the image. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वही एग्जांपल दिया था कि हमने W को एक्सप्रेस कर दिया W प्लस सम रैंडम मैट्रिक्स. वो जो रैंडम इंफॉर्मेशन आती है ना उसमें, वही क्या करता है, इसमें नॉइज को प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पर हम उस N को क्या कहते हैं, वो रैंडम मैट्रिक्स होगा जिसके डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम बात करते हैं एडिटिव गॉसियन नॉइज की. इसका मतलब है कि जो N है उसकी क्या होगी, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होगी, राइट? तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और इट विल बी प्रोड्यूसिंग एडिटिव नॉइज. नॉइज हम यूजुअली डिफरेंट टाइप के हैं. ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं उस पर एडिटिव नॉइज की. जब नॉइज जो होता है वो उसमें ऐड होता है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो क्लीन इमेज में ऐड होती है. ठीक है, उसको हम एडिटिव नॉइज कहते हैं. वी डू हैव मल्टीप्लिकेटिव नॉइज,
which is sometimes called speckle gneiss. We do have salt and pepper gneiss. We do have paisan gneiss, वगैरह वगैरह. It depends upon the distribution of the gneiss. है ना, बाज़ केसेस में उसकी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बाज़ उसकी पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बाज़ उसकी गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन होती है. अगर आपको थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स का आइडिया है तो उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ. वो रिमूव हो गया, वो रिमूव हो जाता है. मैं थोड़ी सा बात करता हूँ. इसमें हम करते क्या हैं बेसिकली, ये u नॉट x इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एन एक्स, वेयर u इज द क्लीन इमेज एंड u नॉट इज द गिवन इमेज, राइट. अच्छा, अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे तो u चाहिए. तो क्या यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई n जो बेसिकली है वो क्या है, नाइस ही है ऑब्वियसली, मैथमेटिकली अब मैं बात कर रहा हूँ. सो n ऑफ x दैट मे बी एक्सप्रेस्ड इज, इट इज द डिफरेंस बिटवीन given information and the clean information, right. अब हमने करना क्या होता है, we have to minimize this function, you see, n. बेसिकली हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. अब आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो ऑब्वियसली द बेस्ट ऑप्शन फॉर n इज व्हाट, द बेस्ट मिनिमम वैल्यू फॉर n शुड बी व्हाट, 0. लेकिन जो कि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि आप इसको 0 बना सके, ठीक है ना. तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई इसको हमने मिनिमाइज करना है एज मच एज पॉसिबल, एंड दैट्स ऑब्वियस. जैसे आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कम से कम होता जाएगा. अब इसको हम डायरेक्ट इस तरह मिनिमाइज नहीं करते कि भाई आपके पास ये है, तो इसके हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स को यूज करेंगे इसके साथ. बिकॉज से मैंने कहा ना कि ये इनवर्स प्रॉब्लम हो गया. डू यू नो व्हाट इज इनवर्स प्रॉब्लम? इसको नाइस रिमूव करना है ना. इनवर्स प्रॉब्लम यह है कि आपके पास एक कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आपने अवेलेबल इंफॉर्मेशन से अपने सोल्यूशन को निकालना है, ठीक है ना. जैसे इमेज है लेकिन उसमें कुछ चीज़ ऐड हो गया, अब उससे वो चीज़ रिमूव करके आपने वो क्लीन चीज़ को बाहर निकालनी है. ये इनवर्स प्रॉब्लम. एक होता है डायरेक्ट प्रॉब्लम, जिस तरह हम कहते हैं भाई पानी है उसमें आपने चीनी डाल दी है, अब उसमें आपने वो कर दिया. अब ये डायरेक्ट प्रॉब्लम था, कोई इशू नहीं था उसमें, जस्ट ऑलवेज इजी टू डू दैट. डायरेक्ट प्रॉब्लम आर इजीली इजी. अब आपसे कोई कहते हैं ऐसा करो कि मुझे वो चीनी वापस चाहिए, ठीक है ना. So you have to separate that sugar from what? From water. So that is the inverse problem. And how can you do that? अब उसमें इनवर्स प्रॉब्लम है. हो सकता है कुछ चीनी जो है जब आप उसको हीटअप करते हैं ना, तो पानी को आप उसे रिमूव करते हैं तो पीछे क्या रह जाती है, चीनी रह जाएगी. तो हो सकता है कुछ चीनी जो है वो कहीं पे गायब हो जाती है. We may not get exactly the same amount of sugar what we have added in the water, ठीक है ना. या कुछ एक्स्ट्रा उसमें आ जाता है जो शायद पानी में कुछ था वो भी आप इसमें शामिल हो गया. तो ये इनवर्स प्रॉब्लम में यूजुअली सोल्यूशन क्या होता है, इसको हम यूजुअली कहते हैं मैथमेटिकली इल पोज प्रॉब्लम होते हैं. You might have studied that in numerical methods for PD or something. Okay. Inverse problems are what? They are ill posed. Ill posed में obviously हो सकता है सोल्यूशन एग्जिस्ट भी ना करे. मतलब यह है कि आपने डायरेक्ट तो कर दिया लेकिन आप वापस आ नहीं सकते, ठीक है ना. या अगर है तो उसमें सोल्यूशन जो है वो यूनिक भी नहीं होती. माइट बी मेनी सोल्यूशन. तो उसकी फिर यूनिकनेस के लिए या उसके सोल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कह दूं f ऑफ x इज इक्वल टू x, इस फंक्शन, उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? f ऑफ x इज इक्वल टू x की मिनिमम वैल्यू नहीं है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज नहीं होते. तो फिर हम क्या करते हैं, ये तो चाहिए, फिर इसमें हम एक इंटरवल को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई चलो इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड करो लेकिन 0 से लेकर 10 तक, ठीक है ना, या 5 से लेकर 20 तक मुझे दे दो. तो जब आप इंटरवल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपने एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट दे दिया
कि भाई मुझे ठीक है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दो, लेकिन इस इंटरवल मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू दो। द सेम थिंग विल बी डन हियर। अब यहाँ पर हम ऐसे इसको मिनिमाइज नहीं करते, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं भाई अगर आपको रिग्रेशन का पता हो थोड़ा बहुत, रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, we will be having some data. Okay, these are some data points. Let's suppose that's one data point, this is another data point, and so on, so on. We may have something like that. Okay, you are having some data points here, here, and here, and so on. Okay, now how many lines we can draw which can fit these points? There are infinite lines, right? एक लाइन तो हम फाइंड नहीं कर सकते कि वो सारे पॉइंट से पास हो, तो हमें बेस्ट लाइन चाहिए होते हैं। तो हाउ मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ, वो जिस तरह मैंने आपको शो भी किया था उधर उस दिन वीडियो भी मैंने बताई कि आपको वही चीज़ है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, यू कैन हैव दिस लाइन, you may have this line, you may have this line, you may have this line. There are many lines, infinite lines, but we'll be looking for the best line. अब वो बेस्ट लाइन हम डिफरेंट तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। वी मे गो फॉर सिंपल द रेजिजुअल। Okay, we talk about the residual only. We simply take the difference between the actual, the observed value, and we take the value which is the predicted value. You can use the same words here as well. This is the observed image. This is my predicted image. इसको हम फिर मैथमेटिकली सोल्यूशन भी कहते हैं उस प्रॉब्लम की, ठीक है। तो हम सिंपल डिफरेंस देते हैं, ये जो हमारे पास आ रहा है ना, यू नॉट माइनस यू, दैट इज बेसिकली द रेजिडुअल। लेकिन हम बात करते हैं इसमें फिर किस चीज़ की, वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, बिकॉज हो सकता है कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा। कहीं से आप जो नॉइज आप उससे रिमूव कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा काट दिया, किसी से कम काट दिया, बिकॉज नॉइज को आप रिमूव कर रहे हो ना। जब आप नॉइज को रिमूव कर रहे हो तो आप कह रहे भाई हर एक पिक्सल पे क्या करो, ओके, हर एक पिक्सल पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको मिनिमाइज कर दो ना। मैंने कहा हर पिक्सल पे एक्स्ट्रा वैल्यू। अब देखिए इसको मैं अगर काट रहा हूँ तो ऐसे मैंने इसके बराबर लेके आना है, तो हो सकता है मैं कुछ सही इन्फॉर्मेशन को भी काट दूँ। इसके बराबर करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या होगा, यहाँ पे पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट विजुअल भी यूज कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, ओके, कि हम नॉइज रिमूव करते करते बाज़ औक़ात हम जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उनको भी वो कर लें। या इस पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं यूजुअली सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन। वी यूज सम ऑफ स्क्वायर। अब इसमें डिफरेंट नॉर्म्स की हम बात करते हैं। समटाइम्स सम पीपल दे आर यूजिंग वन नॉर्म एज वेल। इसी डिफरेंस पे क्या करते हैं वो, दे टेक वन नॉर्म, समटाइम्स दे टेक टू नॉर्म, एंड देन मैनी एंड उसके साथ जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं, sometimes we want to have a homogeneous region, sometimes we want to have smoothness in the homogeneous, whereas jumps at the boundaries, right? ये हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वो कंस्ट्रेंट इसमें आता है। जिस मैंने बता दिया कि एंटी डेरिवेटिव्स में हम प्लस सी को जब फाइंड करते हैं तो कोई कंडीशन देते हैं कि भाई वाई की वैल्यू 1 होगी जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो वहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है। द सेम थिंग हियर कि भाई मुझे एक ऐसा इमेज चाहिए जो रीजन्स के अंदर जो होगा, डोमेन के अंदर जो होगा वो स्मूथ होना चाहिए। वेयर एज जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो वो क्या करें, वो जंप आपको दें, बाउंड्रीज पे जंप दें, बिकॉज अगर आप देखें तो एज भी जंप्स होते हैं, राइट। अच्छा, मैथमेटिकली ये ध्यान में रख लें कि जिस पॉइंट पे नॉइज होता है वहाँ पे फिर फंक्शन जो है या जो इमेज होता है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। जंप आएगा तो डिसकंटिन्यूस होगा, तो वहाँ पे भी वो क्या करेगा, डेरिवेटिव जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी या इन्फिनिट डेरिवेटिव हो जाती है। ये भी आप साथ में ध्यान में रखिएगा। एनी क्वेश्चन अप टू हियर इफ यू हैव समथिंग? I'll explaining one model very slowly, very carefully. The rest of the story is almost same. Once you learn model designing for image denialism, we have almost same concept for segmentation as well, for registration as well, for indenting as well.
and so on. Right? Okay. Now, what is image deblurring? Right? So deblurring is the process by which we remove blur. And what is blur? How is it different from noise? Okay. In that case, you'll be having a kernel, right? That's obviously again a matrix, but it may not be of the same size that is of the image. Okay. And that kernel will be having convolution with a given image, which will diffuse basically the boundaries, the edges of features inside the image. Convolution is here, right? हम जब एक इमेज के साथ किसी भी कर्नल की कन्वोल्यूशन को लेते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके एजेस को ब्लर कर देते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, देखिए, राइट? और नॉइज में क्या होता है? अब इस केस में, if you see, this n is noise as well. It's the more general. It's more general model, because if you take k is identity kernel, in that case it becomes a noise model. So this will be containing what? It is containing blur and noise both. Right? So if you take n of x is equal to 0, it will become only a blur problem. If you take k is equal to what? Identity kernel, it will become what? Simple noise problem. Right? So sometimes if you do both of them, so obviously it's a bit hard, but if you are doing only this one, so we take remove n with it by taking it 0. Okay? But this is what basically ये मतलब इतना आसान नहीं है कि आप you say that you not x minus n of x and then you multiply by the inverse of k. You take convolution inverse kernel, but it's not necessary that this kernel k will be having inverse all the time, right? You might have a singular kernel as well. जरूरी नहीं, right? असल में क्या होता है कि कर्नल जो है ये कोई ऐसी खास अजीब व गरीब चीज़ नहीं है. इफ आई एक्सप्लेन दैट इन सिंपल वर्ड्स, इसी आपके पास एक जो ग्रास स्मूथर होता है, क्या कहते हैं उसको, ग्रास कटर जो होता है ना, ये इस सॉर्ट ऑफ ग्रास कटर एक पूरा जो सपोज करें जो आपका लॉन है, उसमें जो ग्रास है वो आपका इमेज हो गया सपोज, और जो ग्रास कटर है वो कर्नल होता है, तो उसके ऊपर जा रहा होता है और उसको काट रहा होता है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सबको बराबर काट देता है. सही. तो वो उसको ऑब्वियसली जहाँ पे हो सकता है कोई ग्रास ना हो, कोई बूटी हो, या तो कोई अपने कोई भी फूल लगाया हुआ है तो उसको भी काट देगा, इक्वल साइज में करेगा. ठीक है ना. तो ये असल में इसमें क्या कर देता है कि वो ठीक है, वो इंटरनल रीजन को तो रिमूव कर रहा है, उसको तो क्लीन कर रहा है, नाइस को क्या कर रहा है, उसको कम कर रहा है, लेकिन साथ में जहाँ पे एज आती है तो वो एज भी क्या होता है, उसको भी वो स्मूथ कर देता है, और उस स्मूथनेस की वजह से फिर क्या हो जाती है, ब्लर प्रोड्यूस होता है. राइट? तो ब्लर बेसिकली जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से, यूजुअली अगर हम नेचुरली बात करें, ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से क्या होता है, ब्लर प्रोड्यूस होता है. अगर आप इमेज को एक्वायर कर रहे हैं, आप इमेज ले रहे हैं और बंदा हिल रहा है, ऐसे वो मूव कर गया, तो क्या हो जाएगा, ब्लर आ जाएगा. तो आपने देखा जो पिक्चर्स ले रहे होते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात वो ब्लर होते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि वो मूव करता है, या वो मूव कर जाता है या आप कैमरा मूव कर देते हैं. द सेम थिंग अगर आप अल्ट्रासाउंड वगैरह लेते हैं या कोई बीच में से पास हो रहा है तो वो, ठीक है, तो पास होने की अलग चीज़ है, फिर उसको फिर हम मोशन ब्लर कहते हैं. तो मोशन ब्लर इज समथिंग डिफरेंट, और एक होता है भाई स्टेशनरी ब्लर होता है, मतलब थोड़ा सा हिल गया, वो मूव नहीं कर रहा है, एक तो बंदा मूव कर रहा है ना, जा रहा है और आप उसकी पिक्चर ले रहा है, वो अलग चीज़ है. और एक यह है कि एक बंदा थोड़ा सा हिल गया, उसकी जो बाउंड्रीज थी वो थोड़े से मूव कर गए, और ऑब्वियसली जो इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है. It is also inverse problem, because we will be finding this u from u naught. Okay, तो ध्यान में रख लें, यहाँ पे हम k जो है इसका इन्वर्स नहीं ले सकते. You cannot say that it's a sort of same problem जो हमारे पास denizing के लिए है. You simple denize this whole part and then at the end multiply by k inverse, or apply inverse kernel, because as I said,
इसका इन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करे, राइट। यहाँ पर हम आगे एक टर्म यूज करेंगे, एक होता है कर्नल ऑपरेटर, दूसरा फिर होता है एडजॉइंट कर्नल ऑपरेटर, राइट। आई होप यू नो फ्रॉम मैथमेटिक्स कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन उसका एडजॉइंट इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। कल किसी ने पूछा था ना कि एडजॉइंट का क्या फायदा, आपने पूछा था, ये मतलब दिस एडवांटेज ऑफ एडजॉइंट, अगर सपोज करें किसी भी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका एडजॉइंट तो होता है, तो वो फिर हम जब इसको इधर उधर करना चाहते हैं तो उसके एडजॉइंट को हम यूज कर रहे हैं, इधर से इधर लेके आते हो ना तो वो उसका एडजॉइंट होगा, तो वहां पे इसको हम यूज करते हैं, राइट। ओके जी, दिस आल्सो इनवर्स प्रॉब्लम, सो सॉल्यूशन विल नॉट बी यूनिक, राइट। इट्स अ बिट हार्ड प्रॉब्लम बिकॉज जो के होता है ना उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आपने खुद से प्रॉब्लम डिज़ाइन कर दिया कि भाई ये मेरे पास एक गिवन इमेज है, ये मेरे पास क्या है, इसकी मैं कंपोजिशन ले रहा हूँ, तो उसमें बाद में फिर प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको उससे कैसे करते हैं, कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो या यू कैन डू दैट। लेकिन अभी बीच में मैं नहीं करती हूँ, कैसे ना हो फिर वही मसला हो जाए, राइट। सो ये इट वाज अ बिट इंट्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टू प्रॉब्लम, वन इज lecture number 3. Okay, the next problem that is what? That is image in painting. Okay, so I'll explain that what is image in painting. In this case, the problem is you need to find some missing part in image, or you have to remove some set of pixels which are unnecessary, right? अब ये थोड़ा सा difference है उसका noise के साथ, right? एक चीज होती है जो कि मशीन की वजह से प्रॉब्लम आता है, एक होता है जो किसी इंडिविजुअल की वजह से प्रॉब्लम आता है, सही है ना। Because of the rays you are having, you are basically you might face some noise in the image, you might hear some noise in the image। और एक ये होता है कि पिक्सल लेने के बाद आपने उसके ऊपर राइटिंग कर दी, स्क्रैच आ गया आपके पास, ठीक है ना। यू हैव टू रिकवर दैट पार्ट, वो किस में होता है, या उसको हम इन पेंटिंग में करते हैं, right? So these set of particles basically are artifacts. They are gaps, scratches, holes, occlusions, right? Or simply the unknown region, depending on the application area. You know occlusion? Occlusion means, for example, आप कोई पिक्चर ले रहे हैं और बीच में कोई चीज आ गई है, ठीक है ना, एकदम से कोई चीज सामने आ गई, सैटेलाइट इमेज हो रहा है, ठीक है ना, और बीच में से क्या आ गया, कोई परिंदा आ गया है, कोई जहाज आ गया है, उसके भी पिक्चर बीच में, इसको क्या कहते हैं, अक्लूजन कहते हैं। तो समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड टू रिमूव अक्लूजन फ्रॉम दैट इमेज, तो दोबारा इमेज लेने के बजाय, बिकॉज मूवमेंट होती है, मोशन होती है, ठीक है ना, एक चीज, एक सपोज करें टैंक है, वो जा रहा है, आप उसकी पिक्चर ले रहे हैं, आपने एक बार उसको वहां से इमेज तो ले लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसके बीच में कुछ आ गया, लेकिन फिर क्या हुआ, वो कहीं दरख्तों के बीच में चला गया या कहीं पहाड़ों के बीच में चला गया, अब आपको ऊपर समझ नहीं आया, राइट। तो उस चीज़ को फिर आप क्लियर करते हैं कि भैया क्या होने वाला है, कैसे होगा, तो उसको फिर आप अक्लूजन को रिमूव करते हैं। आर्टिफैक्ट सही है, जो मैंने राइटिंग कहा ना, किसी ने उसके ऊपर फूल बना दिया, खुद से जो आर्टिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, आपकी तस्वीर है घर में पड़ी हुई, आपको पता ही नहीं है, आपके बच्चों ने उठाया, उसको पसंद नहीं आया, आपकी नाक टेढ़ी थी तो उसको सीधा कर दिया, ठीक है ना, तो दैट्स आर्टिफैक्ट्स, उसको फिर हम रिमूव करते हैं, उसका आप स्कैन करो उस इमेज को, और फिर आपको लगता है कि नहीं तो उसने मेरी नाक को टेढ़ी कर दिया, या कभी वो चीज़ें बना देते हैं उस पर, और आपको कहे भाई ये पिक्चर तो मेरी बड़ी अच्छी पिक्चर थी, अब उसको मैं क्या करूँगी वगैरह, तो स्कैन करके उसकी फिर आप दोबारा कर सकते हैं, वो चीज़ हटा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं उस एक्सरेज या उसके ऊपर एमआरआई के ऊपर लिख लेते हैं कुछ, उसको रिमूव करना चाहिए, तो आर्टिफैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। या आपको ब्रेन वगैरह वो कर रहे हैं कोई चीज़, या इधर से अल्ट्रासाउंड वगैरह कर रहे हैं और बीच में से कहीं पे चींटी गुजर रही है,
शायद हो सकता है वो उसको भी डिटेक्ट करे, और फिर आप कह रहे हैं कि भाई ये तो एयरपेन वगैरह भी आ जाते हैं, तो आपसे रिमूव करवाते हैं क्योंकि एयरपेन वगैरह बड़े खतरनाक होते हैं हमारा में, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो वो अलाउड नहीं करते। ओके, सो इसमें जो मिसिंग पार्ट होता है ना, यूजुअली वी डिनोट दैट बाय व्हाट, बाय डी, जो उसका जो डोमेन होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। Whereas the remaining will be obviously because omega is usually used for the whole image domain, right? And D is what that is the missing part, and then we'll having तीन तरह के डोमेन्स बन जाते हैं, ओमेगा, डी द मिसिंग पार्ट, और जो बाकी है जो सही है उसको हम ओमेगा माइनस डी कहते हैं। ओके, तो इम्पेंटिंग इज रिकवरिंग बेसिकली, इस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। जो मिसिंग पार्ट्स हैं उसको आपने क्या करना है, बाय यूजिंग द नाइबरिंग पिक्सल इंफॉर्मेशन और यू ट्रांसपोर्ट सम इमेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर एल्स, कि भाई इसकी नाक और इसकी नाक बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन को क्या करो, ट्रांसपोर्ट करो जैसे। तो मैथमेटिकली इम्पेंटिंग इज फोकस्ड ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन इमेज। जहाँ पे स्क्रैच आ गया तो डिस्कंटिन्यूटी हो गई है, उस को आपने रिमूव करना। Like you see, you have someone has basically, अब ये पिक्चर आ गया, अब दोबारा तो ये पिक्चर आप नहीं ले सकते ना, ठीक है ना। आपकी शादी की पिक्चर है और आपके बीच में किसी ने गड़बड़ कर दिया, तो आप दोबारा तो शादी नहीं कर सकते ना, कि मैंने फिर से शादी करनी है क्योंकि वो फोटोग्राफी सही नहीं हुई है या फोटो सही नहीं आया, किसी ने खराब कर दिया, तो फिर से शादी करते हैं। ये कुछ ओकेजन ऐसे होते हैं जो कि गुजर जाते हैं। या तो अगर आप उसको मतलब ये चीज़ों से रिमूव करना चाह रहे हैं तो यू कैन डू दैट बाय, ओके, दैट्स यूजुअली सिंपल एग्जांपल इज दैट। एंड दैट वुड से सी एक रीजन जो है पूरा आपके पास ओमेगा होता है, एंड देन दिस पेंटिंग डोमेन, ओके, और जो साथ में आता है उसके, दैट्स द एक्सटेंडेड रीजन, राइट, बिकॉज ये लेटर ऑन अगर हम इस पर बात करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें, एज आई सेड, हमने क्या करना है उसके, उसकी नाइबरिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। तो उसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे उसकी बाउंड्री कंडीशन की बात होगी। तो जब बाउंड्री कंडीशन हमें चाहिए होंगे तो थोड़ा सा भी इस आपको एक्सटेंड करना होता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, और नॉर्मल कंडीशन, नेमन कंडीशन जो होता है वो क्या कहता है कि जो यहाँ पे है उसको यहाँ पर भी यूज़ करो, जो यहाँ पे इधर यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पे ये पूरा ओमेगा है, राइट, एंड दिस पार्ट इज ओमेगा माइनस टी, ये भी इंक्लूड है इसमें, लेकिन हम क्या करते हैं कि इस रीजन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कि भाई चलो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता है। एक तो यह है कि कंप्लीटली एक रीजन मतलब आप लॉस कर चुके हैं, ठीक है, आपकी पूरी आंख जो है वो नहीं है, तो फिर तो आप उसको इम्पैक्ट नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ये होगी इस आंख के बेस पे करेंगे तो हो सकता है दोनों आंखें आपके एक जैसे नजर आ रही हैं। हाँ, अगर कुछ पार्ट आपके आंख का वो है मिसिंग है तो फिर ठीक है, वो बात ही उसको कर सकते हैं, या कुछ पार्ट अवेलेबल है तो वो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल कंप्लीटली आपका नाक नहीं है तो आप कैसे नाक को लेकर आएंगे, किसी और को तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, वो कर सकते, लेकिन इंपोर्ट कर दो उसको या वटेवर, लेकिन अपने इन्फॉर्मेशन पर आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंशन का मतलब यही है कि आपको उसकी नाइबरिंग इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तो उन्हीं इन्फॉर्मेशन को फिर हम यूज़ करते हैं और इस डोमेन को हम क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं विद दोज इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इसमें मॉडल जो है इट्स ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली सेम व्हाट वी हैड इन केस ऑफ डिनाइजिंग। अभी हमने डिनाइजिंग के मॉडल की बात नहीं की है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्ट उसका मॉडल इसको यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इसकी उस तरह मैथमेटिकल वो नहीं है कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे मॉडल करते हैं। The same thing will be there. If you remove this part with E, or you just remove this one, ये union D जो अगर आप इसको हटा दें तो ये आगे हम पढ़ेंगे it will become a denizing model. सिर्फ ये पार्ट आप इसको हटाना है। अगर आपने इस साथ में ये डोमेन इंक्लूड कर दिया तो इसका मतलब क्या है, अब ये इम्पेंटिंग का हो जाएगा, राइट। इफ यू एक्सक्लूड दिस पार्ट, you see, if you exclude this part, so that becomes a denizing model. How do we get it? I'll talk about later on. And obviously ये फिर वो अगर आपने इसको इंक्लूड कर दिया साथ में ये भी है तो फिर क्या हो जाएगा, it will become
infantile model. Now, what is the job of this part in here, and what is the job of this part in here? What do we call this quantity and this quantity? I'll be explaining that later on. Okay, and then, as I said, if you minimize this by using some variational techniques, you'll be getting this differential equation. You don't worry at the moment how did you get that. You'll be learning that how do we get this type of differential equation from this type of functions. I'll be explaining the basic principle, basic rule first, right? So in that case, we basically introduce what? We are introducing this new parameter lambda, which is based on what? Which is based on the information that you take some value when you are outside this domain, okay? And when you are inside this domain, then don't consider this part. Zero means what? Neglect this part. मतलब क्या इसका? ये बेसिकली डाटा फिटिंग करता है, बाद में डिस्कस करेंगे. इट्स अ डाटा फिटिंग. वी वांट दिस सोल्यूशन टू बी वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल इमेज, राइट? बार बार हम ये बात करते हैं ना, जो सोल्यूशन है और जो गिवन इमेज है वो एक जैसे हैं, राइट? अब अगर ये चीज मैं इस डोमेन के अंदर भी करूँ, जैसे मेरे पास ये इमेज है जिसमें ये पार्ट मिसिंग है. अब मैं एक और इमेज फाइंड कर रहा हूँ. आई वांट दिस इमेज टू बी वेरी क्लोज टू दिस वन, राइट? अगर मैं इसको इसके करीब लेना चाहता हूँ तो क्या होना चाहिए? यू सी, अगर मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली सेम तो ये यहाँ पे भी तो आ जाएगा ना फिर. लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ये वाला पार्ट ना. यू नो व्हाट आई मीन? मैं चाह रहा हूँ कि जो वहां पे होल था, जो वहां पे स्क्रैच था, वो स्क्रैच मेरे सोल्यूशन में ना हो. तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे क्या करो, जस्ट इसमें सॉर्ट ऑफ डिफ्यूजन करो, जिसको हम कर्वेचर कहते हैं, जैसे कर्वेचर डायरेक्शन. तो इसमें हम बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है ना यहाँ से, इसको इस डायरेक्शन में आप इंपोर्ट करो, इधर यूज करो, इधर यूज करो. तो इस डोमेन में सिर्फ यही चीज करो, राइट? वेयर एज आउटसाइड द डोमेन ये दोनों करो, बिकॉज आई वांट द आउटसाइड टू बी सेम इज दिस वन. ये दोनों को मैं सेम रखना चाह रहा हूँ. सिर्फ इस पार्ट में मैं क्या करूंगा, आई विल बी हैविंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन. दैट्स वाई जब हम कहते हैं कि लैम्डा होगा क्या, कुछ वैल्यू होगी लैम्डा ई की, और ये जीरो होगा जब हम इस डोमेन के अंदर होंगे. ये सिर्फ फर्क आएगा उसमें, ठीक है. और डिनाइजिंग में क्या होता है, फिर एज ए होल लैम्डा आता है, उसमें फिर ये लैम्डा ई इंट्रोड्यूस हम नहीं करते. ये ऑलमोस्ट सेम होता है जिस तरीके से हमारे पास क्या होता है, डिनाइजिंग नहीं करते हम. ओके जी. सो then we talk about image segmentation. Okay, in image segmentation what do we do? जी आगे जाऊं मैं. In image segmentation, we basically divide the image into a certain number of meaningful segments. ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे डिवाइड कर, तो आप कैसे करेंगे, इसको मैं कैंची लेके इधर से भी काट दूं, उधर से भी काट दूं, उधर से भी काट दूं, राइट? यू विल बी एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. और उस तरह नहीं काटना, आपने कंप्यूटर पे करना है, कंप्यूटेशन में अपने से करना होता है कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया. विल बी हैविंग पिक्चर ऑफ दिस क्लासरूम. I want this picture to be separate. I want this person to be separately. This one to be separate. By that purpose, this purpose, to get this information, हम क्या करते हैं, हम सेगमेंटेशन को यूज करते हैं, राइट? तो सेगमेंटेशन बेसिकली क्या करता है, वो इमेज को डिवाइड करता है डिफरेंट सब डोमेन. मैथमेटिकली हम ये कहते हैं, and every domain will be having some certain homogeneity. एक डोमेन को हम पिक करेंगे ना, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन. अब उसमें एक सर्टन सिमिलरिटी होनी चाहिए. अब वो सिमिलरिटी इंटेंसिटी की भी हो सकती है, वो सिमिलरिटी जो है वो टेक्सचर की भी हो सकती है, वो सिमिलरिटी बेस्ड ऑन द कलर हो सकती है, वो सिमिलरिटी बेस्ड ऑन सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, राइट? मुझे सपोज करें भाई ब्लैक कलर यहाँ पे चाहिए, व्हाइट कलर यहाँ पे चाहिए, ग्रे कलर यहाँ पे चाहिए.
ये वाला टेक्सचर अगर ऐसे टेक्सचर है तो मुझे ये चाहिए, अगर ये वाला टेक्सचर है तो यहाँ पे चाहिए। तो हम टेक्सचर के बेस पे भी डिवीजन कर सकते हैं, हम कलर के बेस पे भी कर सकते हैं, हम इंटेंसिटी के बेस पे भी कर सकते हैं, एंड मैनी मैनी मोर। ठीक है। So why do we do segmentation then? You see, what is the process? We are basically dividing the whole image domain omega into some subdomains, omega naught, omega 1 up to omega n. If you combine them together, you'll be getting that original image back. Okay. So why do we do segmentation? We need to find a region of interest. Sometimes we are interested in detection of tumor. So you're basically dividing this image into two parts, tumor part and non-tumor part. Right? Tumor and non-tumor. Right? एक suspicious person है, एक image के अंदर है, so you are interested in detecting that suspicious person, so उसको segment करो दो parts में, एक वो part है जो कि suspicious है, एक वो part है जो कि नहीं है। Satellite images आप ले रहे हैं और आप एक जंगल को observe कर रहे हैं कि उसमें कितनी कटाई हुई है, ठीक है, तो वो जो part जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुई है और जो नहीं हुई है, तो जो हुई है उसको आप अलग से कर दो, जो नहीं हुई है अलग कर दो। Right? That's basically what we are going for. What region of interest? Sometimes we are interested in boundaries as well. आपने boundaries को find करना है, so we do segmentation, or you are doing recognition. Once you found the boundaries, you have selected that region of interest. फिर आप उसको recognize भी करते हैं कि भाई किस किस्म का, ये कौन था, कौन नहीं था, वगैरह। These are basically what? These are some applications. These are some methods or techniques we are doing. You see like that. If this is a given image, you are basically dividing what this domain into different certain domains. One is this domain, one is this domain, this one, and this and one is the other domain as well. This one is background. You usually divide image into two parts. One is background and the other one is foreground. Right? तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारा क्या हो जाता है, ये फोरग्राउंड आता है, वेयर एज जो यहाँ पे जो होगा ये बैकग्राउंड में, राइट? So yeah, in the next lecture we're talking about this model then, which is used. This is known as Mumford-Shaw model. It's obviously a popular one for segmentation. Mumford-Shaw. Okay. So if you have any question, you can ask.